Hello everyone, welcome to Chse Odia. Welcome to this English course for class 11. Today we are starting this course with our first video, which is standing up for yourself. Okay, so we'll discuss about the first 2 units of this chapter. This is a beautiful prose written by a Russian author named Yevgeny Yevtusenko. Yevgeny Yevtusenko. His full name is Yevgeny Alexandrovich Yevtusenko. He's a Russian poet, novelist, essayist, dramatist, screenwriter, actor, editor, and a director of films. So, standing up for yourself लेखिचंती येवजेनी येवतुसेंको नामक जने येवजेनी अलेक्जेंद्रोविच येवतुसेंको बोली जने रशियन ऑथर जे कि जने पोएट भी थिले, कवि, नोवेलिस्ट, औपन्यासिक, एसेइस्ट, प्रबंधक, प्रबंध जे लिखे, ड्रामेटिस्ट जने नाट्यकार, स्क्रीन राइटर जे फिल्म पई सब लेखा लेखी करंती, एक्टर, एडिटर थिले आउ डायरेक्टर ऑफ फिल्म्स भी डायरेक्ट करते. सो ही वाज नॉट जस्ट अ पोएट और ऑथर, ही वाज ऑल ऑफ दिस. he was born on 1933 and he died on 2017. Okay, now what is this story all about? So before starting the unit, before starting the test, let's discuss about the warm up. Okay, here it starts with a question. Have you ever come across a child deserted by the parents? Deserted or left out. गोटे पिला एमती को पिला को देखिछ कि जार पेरेंट्स ताको छाडी दैछन्ती पूरा. हाउ डज ही और सी ग्रो अप? से केमिति बढ़े? हु लुक्स आफ्टर हिज और हर एजुकेशन? If you have not come across such a urchin in life, real life, urchin means poor children, poor child. Okay, if you are not, if you have never come across a child like that in real life, you can watch the movie Slumdog Millionaire, which was released in 2008. It is directed by Danny Boyle and it is co-directed in India by Lovelin Tandon. It is an adaptation to novel Q&A 2005 by Indian author and diplomat Vikas Swarup. Indian author और डिप्लोमेट माने जे राजदूत. ओके, इंडियन ऑथर और इंडियन राजदूत विकास स्वरूप गोटे बुक लिखिथिले 2005 रे. तार ना होची Q&A. ए बुक को, ए नोवेल उपन्यास को बेस करके गोटे मूवी तैयारी हेतला स्लम डॉग मिलेनियर, जाको ऑस्कर अवार्ड भी मिलथिला. बहुत गुडे 3-4टा ऑस्कर अवार्ड मिलथिला से फिल्म को. राइट, 2008 मूवी सेटा को देखि पार. सेठी भी गोटे डेजर्टेड पिला माने केमिति इंडिया रे रहंती, केमिति ग्रो होंती, बढ़ंती, से विषय रे जानि पारियो. Read the following units of text and note how a Russian child has been brought up in the streets. How a Russian child, who is none other than Yevgeny Yevtusenko himself. Here the writer is narrating about his own story, his own childhood. Writer तांकर निजर चाइल्डहुड विषय, निजर पिला दिनर कथा विषय कहउचंती, जेते बेले से गोटे स्ट्रीट रे, गली रे सेमिति छाडी दिया हितला तांको. से निजे निजे बढ़िचंती बा कहि पारो तांकर पेरेंट्स तांकर जत्न नबा पई तांको पाखरे नथिले. So let's read about the story now. Let's read about the prose. In 41, I was living alone in an empty flat in a quiet Moscow street. Moscow is a town, a city. Moscow is a city in Russia. Okay, so in Russia, in Moscow, in a quiet street, the writer was living alone in an empty flat. This is a story about story of 1941. 1941. In 41 माने in 1941, the writer was living alone. एकुटिया रहउतले कोठी in an empty flat, गोटे खाली फ्लैट रे, in a quiet street of Moscow. My parents were divorced
and my father was somewhere in Kazakhstan with his new wife and their 2 children. My parents were divorced. The writer's parents were divorced, separated by law, and the writer's father was somewhere in Kazakhstan. Kazakhstan was at that time it was a part of the Russia. Kazakhstan Russia रो बा USSR रो पार्ट थिला सोवियत रूस रो एबे कजाकिस्तान गोटे अलगा देश होइছে बट स्टिल कहउछन ये मॉस्को रे अछंती आ तांग बापा कजाकिस्तान रे his father lives somewhere in Kazakhstan with his new wife and 2 children. तांगर नुआ तार बापा तार नुआ वाइफ ऑफ दुईटा पिला सहित से अलगा रहुचे. I seldom received letter from him. The writer received letter, but it was not very often. बहुत समय बहुत frequently मिलु नथला. केबे केबे लेटर तांकर बापा ठारो मिले. I seldom received letter from my father. Now talking about the mother, the writer is saying that my mother was at the front. Front means at the border where the armies are fighting. Remember, it is 1941. This is the time during Second World War. Second World War ro time eta. Hala war chalche. And the mother, right? Father is living in Kazakhstan with his other family. And the mother of the writer, he was at the front. She was at the front. Border रे fighting बेले जोटी war चलची से एरिया रे अच्छे काहे के ना she had given up her work as a geologist. As a geologist तांगर काम से छाड़ी देई चंते. He left his job and he became a singer and was giving concert for the troops. The writer's mother left his job as geologist. Geologist माने भूविज्ञान geologist आकारे तांगर जॉब छाड़ी देकी he had become a singer. She had become a singer. से गोटे सिंगर बन जाई चंते. आउ ट्रूप्स मान को, ट्रूप्स मीन्स आर्मीज. से आर्मी मान को पई जो कॉन्सर्ट हुए तांकर एंटरटेनमेंट पई जो कॉन्सर्ट हुए, कॉन्सर्ट मीन्स सिंगिंग शो जो हुए सेतिरे गीत गाइबा पई से बॉर्डर रे रहंते, बॉर्डर एरिया रे रहंते, सेठी कॉन्सर्ट करंते जानते. रहिला के द राइटर अलोन. That's why he lives alone in the street of Moscow. Getting my point? It is the story of 1941. The child, which was none other than the writer Yevgeny Yevtushenko. He lives alone because his parents were separated, divorced. His father lives with his new family in Kazakhstan, and his mother is now a singer and she sings for the troops in the front. And because of that, the writer lives alone. My education was left to the street. My education was left to the street. से जो गली रे मोर एजुकेशन से गली रे छोड़ा ही गला. That means that street will taught me what I have to learn. मते कौन सिखेबार अछि से स्ट्रीट से गली मते सिखेबो, रोड मते सिखेबो, से साही मते सिखेबो, से एरिया मते सिखेबो. माने फॉर्मल एजुकेशन से के अवतार एजुकेशन रो ध्यान दबो, पेरेंट्स तो ध्यान देना. So that person, the writer, he was left, his education was left to the street, and the street taught me to swear. Street मते सिखेला to swear, to गाली दबा पे. Swear माने गाली दबा. To smoke, smoking करिवा. Spit elegantly. Spit means थुम्पिवा, elegantly माने style सहित. Through my teeth. मोर दांत मझी देकी स्टाइल रे थुम्पिवा. से समय रो स्टाइल थिबो कोन ओटे सेटा ए सब जाक मते स्ट्रीट सिखेला. बुझी पाछो? एजुकेशन नाही, गली रे एकुटिया पिला एकुटिया रहे, गली रे सेमती ही चले. स्ट्रीट टॉट मी टू स्वेयर. से स्ट्रीट ही मते एजुकेशन देला, सिखेला. कोन सिखेला? गाली दबाटा सिखेला, स्मोकिंग करवा सिखेला. स्पीट एलिगेंटली थ्रू माय टीथ. दांत मजी देके स्टाइल रे थंपीबाटा सिखेला. And to make my fist at the ready, a habit which I have to
this day. आउ गोटे very very important जिनस सिखेला to keep my fist ready. fist माने होचे मुठा, हाथ मुठा को मोर रेडी करबा पे सिखेला. The street kept me, the street taught me to keep my fist ready, and this habit which I have to this day also I have the habit of this keeping my fist ready or to be ready for the fight. Okay, don't hesitate to go and fight. Always be ready to fight every situation. The street taught me not to be afraid of anything or anyone. That street, say street mate sikhela kono not to be afraid of anything or anyone. कौनसी जिनस को बा कौनसी व्यक्ति को न डरिबा पई that street gave me the teaching. This is another habit I have kept. Two habits that the writer kept with him. First, to keep the fist ready at any time and not to be afraid of anything or anywhere, anyone. कहा को भी और केत कौनसी जिनस को बा कहा को भी न डरिबार निर्भय होबार and to keep the fist ready. These two habits the writer keeps with him to the date he writes the story. I realized that what mattered in the struggle for life was to overcome my fear of those who were stronger. I realized that what mattered in struggle for life, for struggle for life पे struggle कर रहे कौन matter करे. The everything that matters in the life or in struggle of life is to overcome one's fear for those who were stronger. That means जे तुम ठारू stronger अच्छी तांको ठारू बा तांको फेस करिवारो जो डर अच्छी तांको फेस करबा पई जो डर अच्छी से डर को ओवरकम करवाटा जदि तुम शिखी गल ताले तुम लाइफ रो स्ट्रगल को जीति पार. The writer is saying that in the street he realized that everything that matters in life is to overcome your fear. तुमरो डर को ओवरकम करिवार अछि जिनिवार अछि. कहा प्रति डर तुम ठारू अधिक स्ट्रांग जे अछि अधिक शक्तिशाली पावरफुल बा तुम ठारू जते भी मुश्किल प्रॉब्लम अछि ताको फेस करबा पई जो स्ट्रांग फीलिंग अच्छे बा जो डर अच्छे ताको ओवरकम करवाटा ताको जिनिबाटा सेटा ही सबुठारु इंपोर्टेंट जिंस लाइफ रे. दैट टीचिंग गिव टू द राइटर, दैट टीचिंग इज गिवन टू द राइटर बाय द स्ट्रीट ताको सिखेला एटा. ओके, क्वेश्चन हमें लास्ट को करबा सब जाके यूनिट रो पाठ सरले. नेक्स्ट लेट्स गो टू द सेकंड यूनिट. ओके, the ruler of our street was a boy of about 16 who was nicknamed as Red. The ruler of the street, say street ro raja or gunda you can say. The street ro gunda was a boy of about 16 years of old who was nicknamed as Red. Nickname of that boy was Red. Okay, and tar na hoche Red. Red was na diya itla. Red was big, bodo, and broad shouldered. His shoulders are broad, okay, hatta katta, beyond his years. That means he does not look like 16. He was about 16, but he is beyond his years. That means he looks older than 16 years of age. 16 years to older dekha jay. Okay, so Red walked masterfully up and down our street, legs wide and with a slightly rolling gait like a seaman on his deck. Okay, so Red walked masterfully. Red walked masterfully. Masterfully माने राजा भड़िया, मास्टर भड़िया. Red walked masterfully up and down our street. आम गली रे याड साइड से बुले masterfully. Legs wide, गोड़ गुड़ा को वाइड पकाए एपटे एमती एमती पकाए राजा मान को भला चलियो ला राजा मान को भला चलले एमती गोड़ वाइड पके के एमती मास्टरफुली चलोगे ने दैट काइंड ऑफ वॉकिंग. ही वॉक्स लाइक
a master. He walks like a king. Who? Red, who was the ruler of the street. And because he was ruler, he walks like a ruler. In a slightly rolling gait. In a slightly rolling gait. Gait means dhango, bhabo. Hala? With a rolling gait, re, like a seaman on his deck. जो seaman अच्छी sailor, नाबिक बा कैप्टेन गोटे जहाजर कैप्टेन जमती तार डेक रे डेक माने कौन तार फ्लोर ऑफ द शिप रो जो फ्लोर अच्छी से गोटे सेलर जमती चले दहली दहली करी रोलिंग गेट माने कौन एमती दहली दहली के राइट समुद्र लहरी रे शिप डहलु थो कि नहीं तो जमती गोटे सेलर बा सीमैन तार डेक रे चले से भाया ये दहली दहली के राजा भाया मास्टरफुली चले के रेड he is a boy of 16 years of old but he looks beyond his age because he is a very hatta man. He is a very broad sighted and big boy. Okay, from under his cap it peak always at the back of his head. From under the cape which peak always at the back of his head. जो कैप से पिंदी था से कैप का that cap is always at the back. से कैप रो जो पिक अच्छी जो सामना पटोटा अच्छी से सब बेले पछ को एमते बुली की थाए पछ को बुली की थाए माने से कैप देखी थी तो मैंने कैप को उल्टी की पिंदंती ना स्टाइल मारवा पे तो से कैप को उल्टी की पिंदे at the back of his head and from that cape his forelock means hair tumble down pode for a tumble down in a fiery cascade ro meaning house waterfall. Okay, waterfall. Fiery cascade means waterfall of fire जेमती लार्भा पड़े जमती देखा लार्भा वाटरफॉल माने फायर वाटरफॉल लार्भाटा गोटे ऊपर जगार जो तल जगह को झरिकी वाटरफॉल भाया झरणा भाया पड़ुव के देखा फायरी कैस्केड ताको कहा जाए फायरी कैस्केड इज दैट मीन्स अ वाटरफॉल ऑफ फायर से कहते द राइटर इज डिस्क्राइबिंग दैट द हेयर द फोरलॉक दैट मीन्स द हेयर that hair comes down of his out of his cap like a fiery cascade गोटे फायर वाटरफॉल भाया तार चुट्टी गुड़ाक से केप रु बाहरी थाए लंबा हेयर रखी एंड आउट ऑफ हिज राउंड पोक मार्क फेस एंड हिज फेस इज राउंड फेस टा राउंड अच्छे गोल अच्छे पोक मार्क मीन्स सम मार्क्स आर देयर पोक मार्क्स मीन्स जो स्मॉल पॉक्स रोग हेले जो चिन्ह आसे बसंत रोग आसिले हेले ला मु नहीं बसंत रोग जेतले आसिले जो छोट छोट माने ये हो जाए छोट छोट चिन्ह रही जाए ताको पोक मार्क कहा जाए. ओके सो हिज फेस वाज राउंड एंड पोक मार्क eyes were green like a cat and he sparkled with scorn for everything and everyone. Scorn means hate, रागिबा माने सबु जिंस को समस्त को से रागी करी चाहे तार आखि बुझी पारछो. Here the writer is describing about Red, a person who rules the street. He walks like a king. He walks like in a rolling gait like a seaman on his deck. He wears a cape which is always, the peak of which is always behind his head. His forelock, his hair tumbled down like a fiery cascade. His face was round and pockmarked. Eyes were green like a cat, and that eyes always sparkled with scorn. सब बेले रागरे झलसुतला आखि तार सब बेले रागी करी. Scorn for everything and everyone. सबु जिंस को समस्त को खाली रागी की तार आखि चाहूला माने से थिला से स्ट्रीट रो गुंडा. 2 or 3 lieutenants in peaked caps back to front like rats tripped at his heels. So 2 and 3 lieutenants means जे मेजर थिवो कर्नल थिवो तार साइड रे लेफ्टिनेंट्स थिवे
लेफ्टिनेंट्स रो अर्थ होचे देखो एटा लेफ्टिनेंट मतलब भी पढ़ांती बेले बेले बट एक्चुअली यार प्रोनाउंसिएशन हो लेफ्टिनेंट आर्मी रे थाय कि ना लेफ्टिनेंट सेमते लेफ्टिनेंट जनरल थाय कि ना एठी लेफ्टिनेंट रो अर्थ होचे असिस्टेंट गुंडा थिला तारो साइड रे दुई चारटा साइड गुंडा भी थिबे कि ना ये होचे मेन विलेन तो साइड गुंडा भी दुई चारटा थिबे so 2 or 3 lieutenants or assistants they also wear picked caps and they also back to front like reds red भलिया से माने भी आगो पछो हुवंते tripled at his heels tripped at his heels माने तारो गोडे गोडे हुवंते गोडरे गोडरे चालंते माने जेमिते रेड आगो पछो हुए ता पछरे पछरे ता साइड रे दी चारटा चेला चामुंडा भी बुलंते रेड could stop anybody and say impressively the one word money red can stop anybody any boy जे कौन से बॉय को स्टॉप कर दिए रखी दिए अब कहे मनी पैसा दे he can stop any boy गुंडा परा she can stop any boy and say one word money his lieutenants would turn out the boy's pocket से कहला मात्रे तारो लेफ्टिनेंट माने जिबे से बॉय रो पॉकेट्स को टर्न आउट कर देबे सब काट देबे एंड इफ द बॉय रेजिस्ट्स इफ ही रेजिस्टेड जदी से रेजिस्ट करिवो जदी से पिला जार पैसा नउचंती से माने इफ दैट बॉय रेजिस्ट दे बीट हिम अप हार्ड से माने मारंती कुटोटा एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ रेड ऑब्वियसली एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ रेड सो वाज द राइटर I knew he carried a heavy metal knuckle duster in his pocket. He was afraid of red because he was broad-shouldered, he was very strong, big, and apart from that, he carries a knuckle duster. Knuckle duster माने देखी थी वो तो मूवी गुड़ा करे हाथ रे एंटी पिंधंती चारटा अंगूठी थी वो पिंधंती एटी मेटल रो पूरा बम्प से की था राइट मारिवा पे बीट करवा पे knuckle duster पिंधंती सो से गोटे मेटल रो नकल डस्टर भी रखे तार पॉकेट रे सेटा भी द राइटर नो और द राइटर न्यू दैट रेड कैरीज अ नकल डस्टर इन हिज पॉकेट सो इफ समवन mess up with him he will beat him up with his knuckle duster and he's a strong boy he's the ruler then what happened how the writer and the boy red they will come across we'll discuss in the next part we'll discuss in the next class रे हम डिस्कशन करिवा केमिति रेड आ ए बॉय ए हमरो राइटर आंकर मिलन केमिति होची केमिति मिसुचंती आके कोन रेड थारु आके माडो खाउचंती ना रेड को मारुचंती कोन होची that we will discuss in the next session thank you very much for joining